Okay. Breathing for the last so many years. Okay, I actually have my first question. I'm going to come here so that I can talk to. I have my first question to the director here. Yes. Sir, आपने बहुत एक hit series बनाई, which is your Metro Park, right? So, and this is a very well acclaimed series. Tell me, was it difficult to actually cast them together? What actually made you feel that you have to cast all of them together? What was the inspiration? I should say I'm just plain lucky that the whole thing happened. When I initially had the idea in my mind, I had drawn a poster by hand, just for an inspiration. I put it up on the wall, and I looked back at the poster maybe after a year later, and they exactly look like Anupam sir and me. So it was all destiny somewhere. It was supposed to happen, and both of them got together and joined the film, and we had a nice crazy ride with it too. So you have beauties, you have brain, you have talent, and you also have brown. May I know how do you bifurcate all of them? Who is the beauties, who is the browns, and who is the brain and the talent here? It's loaded with talent and beauty. So it's been an amazing ride, especially for all of us. It's been a long journey, as Sir was talking about, but we are really excited for you guys to see this and be part of the journey. Congratulations, the trailer is out and it looks amazing, and I can see your hard work here. Thank you so much. Well, honestly बताऊँ मुझे सब से आपने बहुत वर्कआउट किया है, really बहुत वर्कआउट किया है इस फिल्म के लिए. First of all, thank you, and I must acknowledge my students over here. Well, I'm thankful to all of you who have come here. In fact, we have invited you, but to just give you an experience, and the biggest, most amazing moment for me will be when they will be sitting here and I'll be sitting in the audience. Oh, this is so nice. Thank you so much. Thank you. This is a very special film. Everybody says very special, but this is a very special film because when you get movies and when you get roles which make you go beyond your boundaries, beyond your horizons, that's where a person who has done so much work challenges himself or herself for that matter. Shiv, Shastri, Balboa challenged me not only in my mental space but also my physical space. Even though I am not playing a boxer in it, but he has the mentality of boxer in it. There's a very famous quote which says it's not important to fall down, it's also important to get up, to rise. I'm very moved by this event today because it's very important to make films which you believe in, but it's also very important to make films which run. Because at the end of it, you may make film for your own personal stimulation, but it's very important. That's why people like Nina, Nargis and Sharib and we have done work for years, at least me and Nina. And now we finally got this recognition. मेरा छोटा सा फेस होता था 35 साल तक एक पोस्टर पे नीचे कहीं ऐसा करता हुआ एक चेहरा. And after 38 years in the movie business, I'm finally on the main poster along with my heroine. That's, I think, the great achievement, and that you can achieve only with hard work, not necessarily with stardom, because hard work stays with you. वो आपके साथ रहता है. स्टारडम आती है. मेरे 38 साल के करियर में बहुत सारे लोग आए, बहुत सारे लोग चले गए, मगर हम अभी तक बरकरार हैं, बिकॉज हमारे अंदर शिव शास्त्री बलबुआ की स्पिरिट है कहीं ना कहीं. फैंटास्टिक सर. सर, मैंने एक्चुअली आपके एक इंटरव्यू में भी सुना था जो अभी आपने कहा कि आप इतने लंबे करियर में आप हमेशा एक छोटा सा अंग रहते थे, और इस टाइम एक्चुअली आप लीड जैसे एक पूरा एक हीरो जैसे बाहर पोस्टर में नजर आ रहे हैं. ये बात आपने अपनी मम्मी से शेयर करी? क्योंकि आप इतनी सारी पोस्ट करते रहते हैं अपनी माँ के बारे में. मेरी माँ ने कहा तेरे को पोस्टर पे आने के लिए नंगा तो नहीं होना पड़ा ना. नहीं, I think it's wonderful to come into this theater and see posters of all of us all over the place. It's a very humbling feeling at the end of it. Means people. That's why I said to everybody not to call us legends. This is a newcomer. It's rebirth. This is very humble, sir. No, I mean somebody who has worked so much can actually say. No, I mean it. I think it's. मीना जानती है, हम जानते हैं. हमने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से, ये मेरे से 1 साल जूनियर थी. हमने कहाँ से शुरुआत की है, कहाँ हम मुंबई में आके धक्के खाते रहे, और फिर काम मिला, फिर ऊपर उतार चढ़ाव हुआ, और आज मुझे बड़ा गर्व है अपने ऊपर और मेरे इस पूरी टीम के ऊपर कि हम अपनी मेहनत के बलबूते पर यहाँ पर पहुंचे हैं. And that's very gratifying. Very nice. So you are an inspiration for all of us. And अभी इस क्वेश्चन के बाद आप सिर्फ
एंकर बनिए, मेरी स्टूडेंट नहीं है अब आप. अब मैं स्टूडेंट नहीं हूँ, अब मुझे ऑर्डर आ गया यहाँ से. ओके सर, बट स्टूडेंट ऑल योर लाइफ सर. Of course, that you will. I'm very proud of you. Thank you. Well, now let me ask. Whenever you make anything, you write a novel, you make a documentary, you make a film, मुझे लगता है हमेशा उसमें उसे कुछ कहना चाहिए लोगों को, उसमें कुछ मुद्दा होना चाहिए, उसमें कुछ बात होनी चाहिए जो लोगों तक पहुंचे, लोगों को लगे. और मैंने बहुत सारे ऐसे काम देखे जिनमें बहुत प्रीची तरह से बताया जाता है. शिव शास्त्री बाल्बोआ की सबसे विशेष बात यह है कि हंसते खेलते हुए एक बहुत बड़े टॉपिक को डिस्कस किया है ना अजय. वो टॉपिक जो बाहर के मुल्कों में रहने वाली मेरे जैसी एल्सा जैसी औरतों के साथ होता रहा है, उसको ऐसे टैकल किया कि पता ही नहीं चलता. खेल खेल में बात में बहुत बड़ी बात कह जाते हैं. मुझे लगता है वो इस तरह की बात जब कही जाती है तो वो बहुत बड़ी बात होती है. थैंक यू जयन, आपने इस तरह से ये फिल्म बनाई कि मज़ा भी है, रोते भी है, हंसते भी है, रोमांस भी है, रोमांचक भी है. सोलो पोस्टर में है. Cheers girl, cheers. What is that? If my audience wants to know. मैं ये नहीं बताऊंगी. अरे मैं बता देता हूँ. फिल्म में मीना जी को वोडका बड़ी पसंद है फिल्म में, तो इसलिए वो चेयर गर्ल नहीं है, चेयर्स गर्ल है. That's very smart. लगा ये हम वो रखने वाले हैं मिस्ट्री. अबे ट्रेलर में बोला क्या पी रही हूँ वोडका. एक बार पिया है, पिक्चर में तो बहुत बार पिया है. No. But I must acknowledge the efforts made by our people who made the posters. I think they've done a great job. Yes. So I think all you guys in together in sync look very nice on the poster. Without you all, not at all. Okay, now I'm actually going to go to Nargis here. Nargis, first of all, welcome, and you're looking very nice in the film. You actually are beautiful and pleasing. You have a pleasing personality. Do you think if you can just tell us your experience while working in the film? I mean, I had a wonderful experience working with these two, and when you guys see the film, you'll know why. It's a great adventure, so I'm really blessed to be a part of it. This was something very different for me. Exactly. I know you think I'm very pleasing, Yes. and I always try my best, but I feel like I'm evolving, trying to make a change. What's the word? Reinventing myself, Oh my God, I can That's a actually good see word, that. right? So I really enjoyed playing my character. I think that, yes, I'm pretty, but there's a lot of acting there. I wish I could also say that. Yes, I'm good looking. but it's Listen, I can't say, no, I'm not good looking. No, I have to accept. Was there any inhibition when you actually took off from you were looking very plain Jane? Yeah. No, not at all, because I'm getting into character. When you're acting, you gotta be whatever you gotta be. That's the job. You gotta do what you gotta do. So I really enjoyed that, and it was very interesting because, it was a very lovely role. These two are the main leads, and, having this role, being a supporting actor it was a joy, and it's something different for me, and it's a different kind of movie. It's very realistic. I love the way it was shot and written, and all the acting was so real. So I enjoyed this role a lot. Whether big or small, this role had such an impact. And I think I don't know when they'll know. They won't know. Our support was really important. I think we helped to bring a lot of spice along with all your spice. We bring the extra spice. You are the spice of the film, and we are the life of the film. Yeah, okay, cool. I like that. And my friend Satish Kaushik has come now. And yes, Satish, welcome. अच्छा, एक बात मैं कहना चाहूंगी नरगिस के बारे में कि ये इतनी प्लेजेंट है. सेट पे इनके आने से एक खुशी का एटमॉस्फेयर हो जाता है. बहुत प्लेजेंट है, हैप्पी. खासकर लड़कों में. ये एक ऑनेस्ट क्या बोलना चाहते हो तुम? से जवाब दिया है शाहरुख ने. ना शी इज वेरी प्लेजेंट, हैप्पी. कुछ
क्या मन में कुछ और नहीं है, जो है सामने है, वो मुझे लगा इनके साथ काम Yeah, करके। she's very amazing, positive energy. Yeah. She's beautiful as a person also. Thank you, thank Yeah. you. So Nargis, was it how difficult was it to work? You know, you're working with some powerhouses, like talent powerhouse here, and was it like something? What did you feel any kind of hitches, any hurdles when you? What did you prepare? So I am so happy to work with both of you, as you are. I know you don't want to be legends, Of course. icons. But they are, but they don't want to be called. They don't want to be called. It was great because you always helped me. And I really appreciate that. And you know, sometimes you get lucky, you do get to work with people that help you. But he's an amazing teacher, I'm sure, because on set, he would help me a lot. And So you were practical lessons. yes, he would be a teacher for, I guess, a guru as well. I really appreciate you letting me know if something, whatever, or you would say something in a way to help me change something. So yeah, he was my teacher also, not only my co-actor, which I sweet. love that. Thank you. Sweet, so Thank you. sweet. That's very. Thank you. All right, now going up to the Urdu and the Hindi dialect master, of course, we have Sharib Hashmi. Ladies and gentlemen, can I hear it for Sharib? Thank you. So Sharib, बहुत सारे फैंस यहाँ पर आपके एनीवेज हैं, बहुत पूरे दुनिया में हैं, हमने बहुत सारा आपका काम देखा है। मेरी उर्दू हिंदी भी करेक्ट कर देना, उर्दू तो फिर छोड़ दीजिए, बहुत दूर की बात है, हिंदी जरूर करेक्ट कर देना। मगर ये बताइए कैसे लगा, आप इस फिल्म में हैं, आपको हमेशा हमने एक अलग अलग कैरेक्टर्स में देखा है, यहाँ पर थोड़ा सा इनलाइटन कर सकते हैं? यहाँ पर भी जितना आपने ट्रेलर में देखा होगा, काफी डिफरेंट कैरेक्टर है जो मैंने कभी ऐसा प्ले किया नहीं है। मेरे लिए तो बहुत कमाल की जर्नी रही है। अनुपम सर के साथ काम करने का मौका मिला, नीना मैम के साथ काम करने का, मतलब ये मैं कब से चाहता था कि ये हो, और फाइनली इस फिल्म के जरिए ये एक सपना पूरा हुआ। थैंक यू अजयन भाई फॉर कंसीडरिंग मी फॉर दिस पार्ट। और जब उन्होंने फोन पर बोला ना कि हम मतलब ये टॉकिंग टू नरगिस ऑपोजिट यू, क्या नरगिस कौन नरगिस तो मुझे तो काफी टाइम तक यकीन नहीं हो रहा था। जब वहां पहुंच गए तभी भी मुझे यकीन नहीं होता। व्हेन शी केम ऑन द सेट्स तब मुझे मतलब भरोसा हुआ सच नहीं बोल रहा ये बात, सच नहीं बोल रहा ये नीना मैम की खासियत है। अरे तो ऐसा लगता था ये दोनों एक दूसरे को बरसों से जानते हैं। That the credit goes to her. absolutely. इसने इन्होंने उसको at ease किया, absolutely. by being herself. Thank you so much, Nargis. So Sharif, you're also playing a Punjabi character in this. Anything, because हमने सुना आपके बहुत सारे characters जो आप evolve होते आए हैं as an actor, और हर character को आप audience ने बहुत पसंद किया है आपको। ये character के साथ हम क्या expect कर सकते हैं? इस कैरेक्टर के साथ में बहुत मस्ती है, बहुत फन है, और काफी प्यार है, बहुत लवेबल सा कैरेक्टर। पंजाबी में बोल के दिखा दीजिए। चलिए, इतनी पंजाबी तो सामने आती नहीं है, बट आप लोगों को बहुत मजा आएगा। जो मेरा कैरेक्टर का नाम है उसका नाम है सिनेमन सिंह, जैसे हनी सिंह वैसे सिनेमन सिंह। तो वो गाना वाना भी गाता है, मस्ती भी करता है, और पेट्रोल पंप चला रहा है, और खुद अपना एक म्यूजिशियन का स्ट्रगल भी चल रहा है साथ में। तो मजेदार है। तो सेट पे आपको अगर जैसे हम अभी भी अनुपम सर से बहुत डरते हैं, कुछ ऐसे था डर का? कैसे, मतलब जैसे आप पहली बार जब स्टेज पे गए तो हाउ इज द फीलिंग टू वर्क? अरे यार कौन कैसे करेगा यार, इतने क्यूट इंसान है। हमने इतनी मस्ती की है। बुलवाना था मुझे कि क्यूट इंसान है, यही बुलवाना था मुझे। तो मैं मतलब आई वुड लुक फॉरवर्ड टू गोइंग ऑन द सेट्स, एंड जब अनुपम सर के साथ में सीन होता था तो मजा आ जाता था। तो मैं तो बहुत डरती हूँ उनसे। any thing I mean, if I can know from you Ajay sir, that is there some good memories attached, if you can just share with us while filming the film? कुछ मजेदार किस्सा कुछ हुआ जो आप शेयर कर सकते हैं? Yeah, there was lots of, we had it was a very small crew, and we shot it in New Jersey. So it was almost like family, there were only like 30 to 40 people in the crew. So one of the things what happened was, I don't know, sir, remember if you remember, we had the scene in the bench
which is one of the important locations of the film, where you sit down, and sitting opposite there was a big crowd of people, which is very rare in which happens in US. So people were coming bringing their camping chair. There was camping happening, and they were watching the shots, and whenever the shot happens they would say excellent and they will start clapping. So my job now, I can't say anything. I can't go back and say, sir, one more shot, one more. The audience like. So we had so much fun filming this, and Sharif's character too. I keep telling him, it's a very tricky character to play, because if you go one notch up, it could be a caricature role. So he had played it exactly on that perfect note. So he has done an amazing job, to just like all of them. I think also, I'm glad you reminded that it was a very small unit, about 35 people. We had a very good producer team. We had Kishore Variat, who produced the film with Ashutosh and Anita, and they were like food suppliers also to me. Ashutosh used to cook food for us, who was our producer, and we खुद बना के उनको अपनी बीवी की खाने पे इतना यकीन नहीं था, तो वो खुद बना के खाना खिलाते थे. और हर शूटिंग में कोई भी इंडियन फैमिली आती थी, आज आपके लिए क्या खिलाएं, क्या लेकर आएं. तो आई थिंक any film which has on-set vibes which are warm and happy and pleasant, that gets translated into films also. I always believe that. Well, I can see that. Sir, एक और चीज अगर मैं पूछूं, यहाँ पे मैंने ब्यूटीज देख ली, ब्रेन देख लिया, टैलेंट देख लिया, एक बहुत क्यूटी इंसान भी है, इंसान में क्यूटी कैरेक्टर भी है इस फिल्म में. अगर उसके बारे में कुछ कह सके, बिकॉज पोस्टर में वो क्लियरली नजर आ रहा है. कैस्पर, इसका कैस्पर है नाम फिल्म में. हमारे ये छोटे से कैरेक्टर्स हैं. इसका और मेरा बड़ा टेंशन चलता रहता था, बिकॉज वो मुझे छोड़ के चले जाते थे घर वाले, बिकॉज दे हैव लाइक इन अमेरिका दैट हैपेंस, और मैं उसको कैप्सूल बुलाता था. तो कैस्पर वाज अ ट्रेन्ड डॉग, बट बड़ा मूडी था, और उसके जो ट्रेनर ने था उसको स्पॉइल किया हुआ था. बाय बिफोर एवरी शॉट शी विल गिव हिम फिश का कुछ देती थी, और फिश खाता था वो, और मिलकर उसको प्यार करना था, मगर एवरी टाइम यूज्ड टू and his mouth used to sort of have such a fish odor that it was tough to be sort of loving and things like that, but he was very cute. किसी बड़े महान कलाकार ने कहा कि दो लोगों के सामने एक्टिंग मत करो, एक किसी जानवर के सामने और एक बच्चे के सामने. तो there was no acting. I think that very good device that Arjun used was that his dialogue will come in a blurb. So that was very good. Very nice, sir. And even the other characters, when you see the film, 10 तारीख को दोस्तों पीछे जो हमारे कैमरे के पीछे खड़े हैं, 10 फरवरी को रिलीज हो रही है. छोटी सी फिल्म है, इसको फैला दो, आग लगा दो, इसमें ऐसा कुछ बना दो. It's very important because all the other characters, bikers, and today also I want to thank all the bikers who brought us Are they here? to this place. Yes, A big hi to you all, big hi. they were professional bikers like these people are, but उन्होंने इतनी अच्छी एक्टिंग की है. और वो ना बहुत सॉलिड, बड़े बड़ा शोल्डर, हट्टे कट्टे इतने सब, और मेरे से बात करेंगे इतनी सॉफ्टली. मैम आर यू ओके? या दे वर वेरी स्वीट, दे वर लवली. All right, so I saw it's looking brilliant, but I know the entire media which is sitting here, and there are a lot of fans who actually want to talk to you and know a little more about the film. So can I open the Q&A for the media, if I may? Is the mic and the Mr. Director, I saw the trailer, and I think it's fantastic. That's what. And as always, the performance is the concept. You want to be, you are a Rocky, you are a rock star, you are Rocky. You might not win a boxing match, but you won her and sent her to India and helped her to in her journey, That is fantastic, Two rock stars in one frame. Please do not miss this. So the this camera. is something, I'm sorry, my office is nearby, but as usually it happens, I went to the wrong theater. Actually, when trailer was happening here, he told me कि तेरे ऑफिस के सामने है, पर I did say मेरे को लगा फन रिपब्लिक मेरे ऑफिस के सामने है, मेरे को ये नहीं पता ये भी मेरे ऑफिस के सामने है. So I went to the wrong place as always, But thank you very much. Thank you very much and thanks a lot. ये आपकी बारी है. Trailer is really fantastic and I wish. आप आए, अशोक पंडित जी आए. Thank you. अशोक जी पैसे लेंगे अभी आप. But thank you. Really I'm touched. ये हमारी दोस्ती 42 साल से है, 42 years से, और हम एक दूसरे के कंधे हैं. Thank you. Thank you, Satish sir. Thank you for coming here and using this. To
India and She's also coming back to India. ये come back हमारा word जो है बड़ा ही गंदा है. She's come back to India. Yes, She's never gone. हमारा न्यूयॉर्क में बहुत काम कर रही हैं ये. Yes, it's your comeback to India and as well as बड़े पर्दे पे comeback है. How excited are you for the role? And अनुपम खेर जी है, नीना जी है, इतने legend actor actress हैं, उनके साथ काम करना किस तरह का experience था आपका? I said this before, my experience with the legends have been absolutely amazing, and I feel honored and privileged and blessed because I learned a lot from them, which is really important. Like, you're like a mentor, which is amazing, and I need that in life. And my coming back to India, I'm very excited to be a part of this film because this film is absolutely amazing. I've seen the change that's happened since the last couple of years. A lot of films or movies, series are happening on OTT, and I've seen now that the content is the most important thing. And when they asked me to be a part of this film and I read the story, I just knew right away that the story is, I don't know what the word is, like Whatever comes to your mind. original. Yes, that's a good word. The film is original, it's real, the characters in here are all important. You know, I'm a supporting actress here, and I know if my character was not there, something would be lost. Does that make Everything sense? would be lost. Yeah. Oh, everything. You're too kind. He's too kind. But I realized that all our characters are so important to create something so realistic, and it was just such a pleasure to be a part of something so original and real. Does that make sense? अनुपम जी, मेरा सवाल आपसे भी है. आपने अपने बाइकर्स फ्रेंड्स के लिए एक टैटू भी बनाया है मूवी में. अगर कुछ आप बताना चाहोगे उसके पीछे किस तरह की स्टोरी है? हाँ, मैंने जिंदगी में कभी कहीं भी कोई भी टैटू वगैरह नहीं बनाया. तो जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ा तो उसमें टैटू था, तो मैंने कहा चलो अभी तो आई कैन ऑफिशियली हैव अ टैटू. एंड वो अच्छा है सिस्टम यार. वो मतलब वो स्टिकर लगा दिया था उन्होंने और बस मैंने ऐसे एक्टिंग की जैसे दर्द हो रहा है, और वो पर रहा वो 1-2 हफ्ता रहा वो. जब मैं उधर न्यूयॉर्क में वर्कआउट करता तो मैं जानबूझ के आधी गंजी पहनता था ताकि लोगों को लगे टफ गाय कोई टैटू लगा के घूम रहा. बट those bikers were amazing, and even today the people who brought us here, we wanted to sort of make it into a different kind of an entry. There's a sense of power in a motorbike, but people who are riding are very very काइंड एंड जनरस पीपल. वो सारे एक्टर्स जो हमारे साथ वहाँ थे वो बहुत अच्छा उन्होंने काम किया, बहुत अच्छा. इट वॉज वंडरफुल द वे आर लाइन आर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइज्ड इट फॉर एवरीबडी. इट्स वेरी, वरना होता है कि क्योटिक है, बट वेरी प्रोफेशनल पीपल वर देयर. मीना जी, आपसे एक और सवाल होगा, लास्ट सवाल मेरा. फर्स्टली कॉन्ग्रेचुलेशन, मसाबा रिसेंटली गॉट मैरिड, एंड ऊंचाई को जिस तरह की सक्सेस मिली आप दोनों को कॉन्ग्रेचुलेशन उसके लिए. पर मेरा सवाल ये रहेगा कि जिस तरह ये मूवी में ट्रेलर में बताया है कि बाहर के लोग ने कहा कि किस तरह से, सो व्हाट वाज द वन थिंग दैट यू रियली लाइक अबाउट द स्क्रिप्ट व्हेन यू गॉट द स्क्रिप्ट, एंड स्क्रिप्ट में सबसे अच्छी बात क्या लगी आपको? आपके रोल की भी बातें भी बोल सकते हो थोड़ा. वर्ड का नहीं, सिर्फ इसका दिखाएंगे वोडका. नहीं, मुझे जीवन में भी जनरली सिंपल चीजें ज्यादा पसंद है. सिंपल, मैं कपड़े भी सिंपल पहनती हूँ, खाना भी सिंपल खाती हूँ. मुझे इस फिल्म की ये बात बहुत अच्छी लगी है, मेरे रोल की भी बात और टोटल फिल्म की बात सीधी सा सिंपल है. कहीं कोई नाटकीय चीज नहीं है इसमें, एकदम रियलिस्टिक है और एकदम सिंपल है. ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा इस फिल्म के बारे में, और इसलिए मजा भी आया. थैंक यू. Can we just pass it on to the next one? Please, can you just... It started with Anupam sir. At that point of time, he was in New York shooting for his hit series New Amsterdam. So I went and told him the script, and immediately he got on board. And then that's how he helped me reach out to Nina ma'am. And I think I did this thing through narration through the Zoom because this was COVID and all those things. So she automatically, I think I've never done that before. So I was very nervous doing but she immediately liked the role, and as soon as I got these two, I knew that 90% of my job
job is done. And then Sharif joined and Nargis, all these things happened. But one of the hardest things was it was during the COVID time, so it was all remote, trying to figure things out. So that was the hardest part. You shot during COVID too? Yes, yes. A lot of protocol, COVID protocol we had to follow. And I also want to add to what he said. I think actors actually are very greedy for a good role. The good role very rarely comes. हम बाकी काम तो काम करने के लिए करना होता है. 80% तो काम इसलिए करते हैं क्योंकि काम है, पैसा कमाना है, नौकरी पे जाना है. बट ऐसे रोल मिलते हैं तो हम टूट पड़ते हैं. दुनिया का कोई भी एक्टर हो, they all want to have a good role. Hi, over here to your right, sir. This is Mayur from Beyond Bollywood. I have one question for Anupam sir, one for Nargis and one for Sharif. Anupam जी, माफ करना मैडम, आई थिंक 3 भी बहुत हो जाएंगे. अनुपम जी, फिल्म में जो ऑब्वियसली रॉकी बल्बोआ को लेके जो डायलॉग है, और जैसे मैंने वो डायलॉग देखा और मेरे जहन में एक बात आई कि ऑब्वियसली आप काफ़ी you're a veteran of the industry and a veteran of life. I'm also not very young, but मेरे personal life में जब मैं कोशिश करता हूँ, चाहे मेरे भांजे हो या when I come across young kids, और उन्हें कोई चीज़ जो शायद जिसकी जानकारी मुझे है या जो मेरे जनरेशन में आई थी, अगर उस चीज़ के बारे में बताता हूँ तो कई बार ये होता है कि they don't take it serious. उन्हें ऐसा लगता है कि ये तो बड़प्पन दिखा रहा है, अपने आप को बड़ा दिखा रहा है. ये चीज़ पर्सनल, ये चीज़ मैंने महसूस की है. तो इसके बारे में सर आप कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से कोई मैसेज मेरे ख्याल से अपने से कम उम्र के लोगों से बात करने के लिए उस उम्र का हो जाना बहुत जरूरी होता है. If you are talking to a 16-year-old boy, you have to talk to him like a 16-year-old man. The problem is that we should not be condescending कि मैं तेरे से ज्यादा जानता हूँ, because आदमी सीखता उसी से है जिंदगी जीकर, किसी borrowed knowledge से नहीं सीखता at the end of it. It's a दस्तूर है लाइफ का. मैं जब बहुत छोटा था तो मेरी माँ रोटी बनाती थी तो मैं तवे पर हाथ लगाने की कोशिश करता था, तो मेरी माँ हाथ पे ऐसे मारती. तो मेरी एक दिन दादी ने कहा कि इसको एक बार तवे पे हाथ लगाने दे, उसके बाद नहीं लगाएगा. तो मेरी माँ का दिल धड़का कितनी, पर उसने कहा चुप है, ठीक है लगा ले. तो उसके बाद लगाया, तो मैंने कभी नहीं लगाया. So you when you are talking to your nephews or nieces or anybody, don't try and preach them, don't try and teach them. That's what this film is about. It's not about preaching, it's about sharing. So I think if you do that, both as an actor, I learn more about acting by being a teacher in an acting school, because my students, they sometimes teach me, oh, this is also an interpretation to a scene. आदमी जब अपने वेटरननेस का, लेजेंडनेस का बोझा अपने सर पर लेके चलता है ना, तो फिर सीखने को कुछ नहीं होता है. I don't carry the burden of Anupam Kher on my shoulders. I'm happy to be a newcomer. आपने कहा कि वेटरन भी हैं, ये भी है, उम्र में भी नहीं है, अभी तो उम्र शुरू हुई है दोस्त. Nargis, just one question for you, Nargis. Like looking at your career, you started with Rockstar, and you are this ethereal beauty. And looking at your career, if I have to say in Hindi cinema, and some of the works which I liked of yours personally, one is I think Madras Cafe, and there was a film called 5 Weddings, I think, which I happened to see a few years ago. And I think one thing which I observed was that, the moment obviously you have to play a character where you have to speak in your natural tone largely, that is where, you're most comfortable. So is this how you also, would want more such roles, or you're open to anything? I'm obviously open to anything and everything, and yes, of course it would. English is my first language, so I am at ease with English, so thank you for noticing that. But yes, I'm open to any role, because as an actor we have to work hard. It's not an easy job, so if you're willing to work hard and work on the role, you can do anything. But is Hindi still the biggest challenge for you after all? I wasn't born and raised here. I didn't grow up with Hindi, so it will always be slightly, not like English. That's what I can say. Okay. शारिफ जी, obviously आपका तो बड़ा मजाक है, कैरेक्टर लग रहा है, नाम भी बड़ा सिनेमन सिंह है, बट उसके जो बाल हैं उस पर तो शेड कुछ ब्लूबेरी शेड जैसा लग रहा है. तो जब आपको बताया गया कि बाल भी ऐसे ब्लू करने पड़ेंगे, तो आपका क्या रिएक्शन था?
मैं तो बहुत खुश हो गया था कि पहली बार मेरे लुक पे इतना काम किया जा रहा है। इनफैक्ट हमने 4-5 कलर्स इस्तेमाल करके देखे थे। पहले ब्राउन किया, ब्लॉन्ड किया, ग्रीन किया, फाइनली जब ब्लू देखा तो लगा कि हाँ, मतलब तो ये कॉल क्या आपका था? ब्लू सबसे ये सब पूरी टीम का कॉल था। मतलब हम सब ने मिलके, मुझे भी देखने में अच्छा लगा, मुझ पर ब्लू थोड़ा अच्छा लग रहा था। गाना बजने लगा फीलिंग ब्लू। और ये अच्छी बात है, ऐसा बहुत कम होता है। यस मैम, यस मैम, यस। This is Asta from Awesome TV. Yes. My question is to Anupam Kher sir. Firstly, I love your work. Absolutely love your work. Thank you. And ये फिल्म में आपने एक बहुत अच्छा डायलॉग बोला जो मुझे बहुत मोटिवेटिंग लगा कि सवाल ये नहीं है कि हम कितने जोर से गिरते हैं, सवाल ये है कि हम उठते हैं या नहीं। वाह, आपको याद भी हो गया। वो बहुत अच्छा डायलॉग था। एंड आपके लाइफ में कोई ऐसा टर्निंग पॉइंट आया है जब आपका करियर लो चल रहा हो, पर वो फिल्म जो आपको हमेशा याद रहेगी? मेरे को मेरे माता पिता की लाइनें हमेशा याद रही हैं। फिल्में तो हमेशा असर करती हैं। मेरे फादर ने बहुत यंग एज में 9th स्टैंडर्ड में था तो उन्होंने एक किस्सा हुआ था और उन्होंने मुझे समझाया था कि, और उन्होंने एक शब्द जो सेंटेंस बोला था वो इस सेंटेंस से भी थोड़ा सा, मतलब ये डायलॉग उससे प्रभावित है कि फेलियर इज एन इवेंट, नेवर ए पर्सन। इवेंट फेल होता है। तो जब ट्रेलर शुरू नहीं हो रहा था बहुत देर तक, तो हमारे प्रोड्यूसर साहब कह रहे थे लोग मर गए, अभी ट्रेलर नहीं शुरू हो रहा। मैंने कहा क्या होगा ज्यादा से ज्यादा, इनको बोलेंगे माफ कर दो, कल आ जाना दोबारा। तो आई थिंक दैट्स हाउ माई लाइफ हैज बीन. That's how I, but in a very very big film, I had a facial paralysis in हम आपके हैं कौन. I went bankrupt in 2004 almost. Then I rose up. इतना वही तो है पावर. फेलियर डरा नहीं सकता आपको. मुझे बहुत लोग बोलते हैं कि अरे आपकी पिछले साल 3 फिल्में कामयाब हुई. अरे मैं तो बहुत सालों से कामयाब हूँ. आपको नोटिस अब हो रहा है, बट अपना यू आर हैप्पी है कि नहीं? आई एम प्राउड ऑफ यू. थैंक यू. मतलब यू wrote a letter to अनुराग saying हमारे एज के रोल तो हमें दे दो, अब तो आपके ही एज के रोल आ रहे हैं. हाँ, और टचवुड कर लो सब, अच्छे रोल आ रहे हैं. अच्छे रोल आ रहे हैं. मेरी एज के सिर्फ मम्मी नहीं हूँ, बहुत रोल हैं. और एक फिल्म ऐसी है जिसमें मेरा जो कैरेक्टर है, फिल्म का नाम भी वही है. जैसे अनुपम ने कहा कि पहले छोटे छोटे फेसेस आते थे और अब अनुपम का बड़ा मेन फेस है, तो ऐसे जब मुझे पता चला कि इस फिल्म का नाम मेरा कैरेक्टर है, तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, बहुत बड़ी बात थी. और मैं तो ये कहना चाहूंगी, ये ना सपोर्टिंग एक्टर, सपोर्टिंग एक्ट्रेस भी होना ही नहीं चाहिए. ये हिंदुस्तान में ही है सिर्फ, नहीं सब जगह. कैरेक्टर एक्टर नो, ये कैरेक्टर एक्टर है, ये कॉमेडियन है, कॉमेडियन, ये विलन है. हाँ, मतलब कि पंचायत कहाँ से कॉमेडी है, यू नो व्हाट आई मीन. और सपोर्टिंग एक्टर क्या होता है? एक्टर तो एक्टर ही है. मैं अपना एक्टिंग तो अच्छी करूंगी ना. सपोर्टिंग एक्ट्रेस, सपोर्टिंग एक्टर ये इसलिए है कि ज्यादा लोगों को बुलाने के लिए ज्यादा इनाम देने होते हैं, तो शायद इसलिए करते हैं. बट मुझे लगता है ये हट जाना चाहिए. हाँ, उस फिल्म, एक फिल्म है जिसमें नरगिस ने भी अच्छा काम किया, अनुपम ने भी किया, मैंने भी किया. इसने शायद इतना अच्छा नहीं किया, उसको मत दो. मतलब ऐसा कर सकते हैं ना, ये थोड़ा ना सपोर्टिंग एक्टर, कॉमेडियन, हाँ विलन. पहले तो विलन बहुत होता था. सो आई थिंक ये हट जाने चाहिए. तो ये हमारे लिए, जैसे अनुपम ने कहा, मेरे लिए भी बहुत बड़ी बात है कि मैं पोस्टर पे हूँ और मेरा अच्छा चेहरा उसमें है. बड़ा चेहरा. सर, आर वी रिलीजिंग द फिल्म फर्स्ट इन थिएटर? हाँ, अब आपने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पूछा और ये आप ही से आ सकता था. यू मे बी द PRO ऑफ दिस कंपनी, ऑफ दिस फिल्म. द फिल्म इज रिलीजिंग ऑन 10th of Feb and it's in Hindi, as you must have noted. एक न्यूज़पेपर लिख रहा था बार बार कि अंग्रेजी में है. एंड वी नीड, अगर आप मेरा और नीना का और इन सब का पोस्टर, बड़ा पोस्टर बार बार देखना चाहते हैं, तो इस फिल्म का थिएटर में आप लोगों को देखना बहुत ज़रूरी है. हम पूरी कोशिश करेंगे. मैं पर्सनली हर एक होर्डिंग वाले के पास गया हूँ कि मेरा होर्डिंग लगा दो. मैंने सबसे भीख मांगी है ऑलमोस्ट कि मेरा ये कर दो, बिकॉज ये जो जद्दोजहद है ना, ये स्ट्रगल जारी रहता है और अच्छा भी रहता है.
मैं घर पे बैठा रहूँ और सोचूं कि अपने आप ही हो जाएगा. मैं ट्विटर पे हम लगे हुए हैं, सोशल मीडिया पे लगे हुए हैं, सड़क पे चल रहे हैं, लगा दो ये यहाँ पर कर दो. मेरा स्टाफ कभी कभी मुझसे तंग आ, हरमन मस्ट फेड अप ऑफ मी, बिकॉज वो नीचे आगे मोटरसाइकिल वाले, उनको जवाब नहीं आ रहा है, राठी जी के भाई का फोन आ रहा है, वो नीचे क्यों नहीं आया. बट यू हैव टू डू इट योरसेल्फ. इफ यू आर सपोज्ड टू बी हैपनिंग, then you have to happen and make things happen. So I think it's a great opportunity and अपने आपको अपने घर वालों की कसम है कि सबको 10-10 लोगों की टिकटें खरीद के देना और that's I think that should be the. And but I want to now introduce the people behind the show who have been amazing producers, presenters. Ashutosh Vajpayee and Anita, please come on stage. Rathi ji, thank you for supporting this.